Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the neo-Marxism. Neo-Marxism क्या है? It is a wide-ranging term referring to the critical renaissance of Marxist theory in the post-World War period. Most often used to denote work in radical political economy, which tried to combine the revolutionary aspiration and orienting concept of Marxism with some of the tools provided by neo-Marxist economy, especially the work of Keynesi. Though the label Marxism क्या है? Marxist economy, स्पेशली ये किसके लिए अप्लाई किया था? It was applied to the member of the Frankfurt School who combined the fidelity to Marx's critical and political aim with a sense of the limitation of Marxism in the face of phenomena like fascism or mass culture. Then moving towards the Frankfurt School. The Frankfurt School has become one of the most important prominent of neo-Marxism. ये फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? ये क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द neo-Marxism. It grew out of the Institute of Social Research at the University of Frankfurt, Germany. Neo-Marxism is also known as critical theory, where class division under capitalism is viewed as more important than gender or sex division or issue of race or ethnicity. Neo-Marxism encompasses a group of beliefs that have a common rejection of economic or class determination. See, Jürgen Habermas. Jürgen Habermas started his intellectual career in 1970s with the Synecdoche of Martin Heidegger philosophy. In 1960s, Jürgen Habermas raised the epistemological discussion to a new level in his knowledge and human interest by identifying critical knowledge as based on principle that differentiated it either from the natural science or the humanities through its orientation to self-reflection and emancipation. See, the theory of communicative action, in which he developed the concept of an ideal speech situation and an accomplishing ethics of discourse. Working with Frankfurt School colleague Karl Otto Appel, he processed a mode of communicative rationality that takes into account the effect power has upon the situation of discourse and opposed the traditional idea of an objective and functionalist reason. In sociological rationalization, what it refers to? It refers to the replacement of traditional values and emotions as motivator for behavior in society with rational calculated ones. The implementation of bureaucracies in government is a kind of rationalization, as it is the construction of highly efficient living space in architecture and urban planning. Jürgen Habermas has argued that to understand rationalized properly require going beyond Weber's notion of rationalization and distinguishing between instrumental rationality, which involves calculation and efficiencies, and communicative rationality, which involves expanding the scope of mutual understanding in communication. The ability to expand this understanding through effective discourse about communication and making social and political life subject to this expanded understanding. Then critical theory agrees that on the Karl Marx in that one must become conscious of how an ideology reflects and distorts reality and what factor influence and sustains the false discourse that it represents, especially reflect power of domination. In this theory of communication action, Habermas cast critical social theory in a similarly pluralistic yet unifying way and argues that the main existing theories have their own particular legitimacy as developed lines of imperial research, and that critical theory takes
to the task of critical unifying the various theories and this heterogeneous method and presupposition. Then moving towards the next point, that is the discourse theory. Habermas's discourse theory assumes that the specific type of validity claims aims to justify the cognitive goal or topic of argumentation, determining the specific argumentative practice appropriate for just justification. See, Habermas ने discourse theory assume की है. It is a special type of validity claim that aims to justify the जो जिसका aim क्या है, its aim is to justify the cognitive goal or topic of argumentation, determines the specific argumentative practice appropriate for such justification. और जो specific argumentative practice है, it is appropriate for just justification. Discourse theory calls for a pragmatic analysis of argumentation as a social practice. See, ये जो discourse theory है, it calls for a pragmatic analysis of argumentation as a social practice. मतलब एक social practice माना जा रहा है इसको. Such analysis aims to reconstruct the normative presupposition that structure the discourse of competent argues. See, such analysis aims to reconstruct the normative presupposition. ये analysis का aim क्या है? ये analysis क्या है? It tries to restructure the normative presupposition that structure the discourse of competent arguers. To get this presupposition, one cannot simply describe argumentation as it empirically occurs. See, to get at this presupposition, अभी अगर आपको ये presupposition समझना है तो आपको क्या है, simply describe करना है argumentation as it empirically occurs. Habermas assumes one cannot fully articulate this normative proposition solely in terms of the logical properties of argument. See, Habermas argues one cannot. Habermas क्या आर्ग्यू कर रहा है यहाँ पे? एक जन cannot सब कुछ नहीं कर सकता, ना ही preposition solely in terms of logical properties of argument. Rather, he distinguishes three aspects of argument making practices. See, rather क्या है? Rather, he distinguishes three aspects of argument making practices. Arguments are produced as procedure and a process which he loses aligning with the traditional perspective on argument evaluation. See, rather he distinguishes. Rather क्या कर रहा है? Rather he distinguishes three aspects of argument. तीन aspect of argument क्या कर रहे हैं? वो distinguish कर रहे हैं. Making practice argument as product, as procedure and a process which he loosely aligns with the traditional perspective on argument evaluating of logic, dialectic and rhetoric fragment. To each of these perspective functions as a level of presuppositions involved in the assessment of the cognitive, the goodness of strength of argument. यहाँ पे जो है evaluate, अब ये जो लॉजिकल, डायलेक्टिकल एंड रेटरिक फ्रैगमेंटिव है, इन सब का क्या है? द प्रोस्पेक्टिव फंक्शन एज अ लेवल ऑफ प्रिसपोजिशन. इसमें इन्वॉल्व क्या है? द असेसमेंट ऑफ द कॉग्निटिव, द गुडनेस, स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट. Habermas discourse this theory also has implication for international mode of deliberation, hence for the debate about a potential cosmopolitan political order. See, Habermas discourse theory also has implication. ये जो उसका theory है उसका implication कहाँ पे दिखेगा आपको? international mode of deliberation पे भी दिखेगा. Hence for the debate about a potential cosmopolitan political order. The current discussion moves along four main axes of political or social. अभी जो current axis है, अभी जो current discussion है, इसके क्या है? four main axis है. एक तो political और social, institutional और non-institutional, then democratic और non-democratic and transnational और cosmopolitan. See,
4 एक्सेस के इस डिस्कशन पे करने के लिए 4 मेन एक्सेस कौन से हैं? 4 मेन एक्सेस है, एक तो पॉलिटिकल और सोशल, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, एंड ट्रांसनेशनल और कॉस्मोपॉलिटियन. See, they are formed by background assumption about the scope of cosmopolitan, whereas moral to the extent that it is concerned with individuals and their life opportunities are to the extent that it makes association and institutional central or political to that it focuses on specifically legal and political institution including citizenship. See, अब ये जो थ्योरी है, थ्योरीज आर फॉर्म बाय बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड से चला है और इसके अंदर अजम्पशंस क्या है? अबाउट द स्कोप ऑफ कॉस्मोपॉलिटियन वेदर मॉरल टू द एक्सटेंट दैट इट इज़ कंसर्न विद इंडिविजुअल. अभी ये क्या है? इट इज़ कंसर्न विद इंडिविजुअल एंड देयर लाइफ अपॉर्चुनिटीज एज टू एक्सटेंट दैट इट मेक्स एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशनल सेंट्रल और पॉलिटिकल टू द that it focus on specifically legal and political institution including citizenship. Now we'll move towards the next point, that is Louis Althusser. Louis Althusser rejected the positive content of empirical knowledge entirely. See, अब जो लुइस एल्थुसर है, इसने he rejected the positive content of इम्पेरियल नॉलेज एंटायरली. उसने ये जो पॉजिटिव कंटेंट है ऑफ द इम्पेयर नॉलेज, उसने पूरी तरह से रिजेक्ट किया. ही असर्ट्स दैट एसेंस इज नॉट टू बी फाउंड इन अपीयरेंस बट मस्ट बी डिस्कवर्ड थ्रू थ्योरेटिकल प्रैक्टिसेस. से उसने क्या बोला? ही असर्टेड दैट एसेंस इज he asserted that essence, ये जो essence है, is not to be found in appearance but it must be discovered through theoretical practices. See, जो भी है, आप जितना theoretical practice करोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है. He redefined ideology as a continuous and all pervasive set of practice in which all groups and classes participate in their manipulation. See, he redefined ideologies as a continuous and all pervasive set of practice, जहाँ पे सब ग्रुप क्लास पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के साथ और they try to make the changes. He maintained that Marx's philosophy remained largely implicit as the background system of concept that allowed the scientific work to generate work. See, he maintained that Marx's philosophy remained largely implicit as the background system of concept that allowed the scientific work to generate work. Althusser, neo-Marxist concept of the ideological state apparatus seeks to expose the social cause that permit continual class exploitation via the reproduction of the condition of production as the ultimate condition of production. Say, Althusser's neo-Marxist concept of the ideological state apparatus seek to expose the social cause. वो क्या कर रहा है? It seeks to expose the social class that permits the continuous class exploitation through reproduction of the condition of production as the ultimate condition of production. The reproduction of labor power requires not only a reproduction of its skill but also at the same time a reproduction of its submission to the rule of the established order. See, the reproduction of labor power requires not only, अभी जो लेबर पावर है उनके पास सिर्फ स्किल्स ही चाहिए क्या? नहीं, बट एट द सेम टाइम अ रिप्रोडक्शन ऑफ इट सबमिशन टू द रूल ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर. बट उसी वक्त पे क्या चाहिए? उनको एक प्रॉपर सबमिशन भी चाहिए ताकि वो अच्छे से रूल कर सके, सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश एवरीथिंग इन ऑर्डर एंड इन अ प्रॉपर वे. The superstructure of the societal house is sustained by the production of the lower floor, whose know-how is generated by the member of the superstructure in forms which ensures
subjection to the ruling ideology. See, the superstructure of the societal house is sustained by the production of the lower floor. See, ये जो superstructure है, the superstructure of the societal house is sustained by the production of lower house, right? अभी लोअर हाउस ने अच्छे से काम किया तभी तो ऊपर वाला हाउस भी अच्छे से काम करेगा, तभी तो सब कुछ अच्छा रहेगा. तो ये लोअर हाउस क्या करता है, इट ट्राइज टू जनरेटेड नई ट्राइज टू जनरेट अच्छे से प्रोडक्शन दिखता है, ताकि अच्छे से मेंबर ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर विच एंश्योर सब्जेक्शन टू द रूलिंग आइडियोलॉजी. अकॉर्डिंग टू अल्थोसर, आइडियोलॉजी is a representation of the imaginary relationship of individuals to their real conditions of existence. See, according to Althusser, ideology is a representation of the imaginary relationship of individuals to their real condition of existence. He begins his explanation of his pronouncement by looking at why people need this imaginary relation to real condition of existence. See, he begins his, अभी वो explanation कैसे चालू करता है of this pronouncement by looking at why people, like लोगों को क्यों ज़रूरत है imaginary relation बनाने की. हाँ, जो real में exist है, जो real condition है उसको accept करके आप करो ना काम. The material relation of capitalist production are themselves alienating, but people cannot deal with the harsh reality of their life, so they make up stories about how the relation of the production aren't so bad. This story or representation then alienation them from the real condition. See, the material relation of capitalist production are themselves aligning, but people cannot deal. अभी लोग ऐसे harsh reality कुछ भी ऐसे जो रियलिटी वो एक्सेप्ट करो ना. वाई डू हैव टू मेक अप द स्टोरीज अबाउट द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल. और वो इतनी बुरी तरह से स्टोरी बनते हैं और इतना बुरी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो रियल कंडीशन है वो दिखती ही नहीं, वो छूटी जाती है. दिस आइडिया अबाउट रिप्रेजेंटेशन एंड रियलिटी अज्यूम्स दैट what is reflected in the imaginary representation of the world found in ideology is the real world or the real condition of existence. See, this ideology about representation and reality assumes that जो reflect हो रहा है that is the imaginary representation of the world that is found in ideologically is the real world or the real condition of existence. See, Althusser mentions two major mechanisms for ensuring that people within the state behave according to the rule of that state even when it is not in their best interest to do so. See, Althusser mentioned two major mechanism. Althusser यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू मेजर मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा है, सो दैट पीपल विद इन द स्टेट, जो लोग उस स्टेट में रह रहे हैं वो बिहेव करें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ दैट स्टेट, राइट. इवन वो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं रहा तो भी क्या हुआ, उस आपको उस हिसाब से ही काम करना है. दिस इज कॉल्ड बाय Althusser as the repressive state apparatus that can enforce behavior directly, such as the police and the criminal justice and the prisoner system. See, और इसको अपन बोलते हैं Althusser as the repressive state apparatus that can enforce behavior directly. और ये जैसे पुलिस वालों का बिहेवियर क्या है, पुलिस वालों ने बोला फाइन भरना है तो आपको फाइन भरना ही पड़ेगा ना, लाइक कोई डाउट ही नहीं आप नहीं भर सकते हो. फिर क्रिमिनल जस्टिस एंड प्रिजन सिस्टम, अब क्रिमिनल जस्टिस वगैरह अगर आपने गुनाह किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी. एंड प्रिजन सिस्टम, थ्रू दिस apparatus the state has the power to force physically to behave. See, through this apparatus क्या है, the state has the power to force physically to behave. The literacy studies are the second mechanism that he investigate and called ideological state apparatus. See, the literacy studies are the second mechanism. ये क्या है, these are the second mechanism that he investigate and called ideological state apparatus. Though the ruling ideological state apparatus was once the church. See, फिर भी यहाँ पे रूलिंग पार्टी कौन था, चर्च था उस वक्त, जो चर्च में बोला जाता था वो सब था. Althusser claims that it is now the school which at one phase holds its young audience captive 5 or 6 days a week and has a number of different disciplines through which to
disseminate its code known how. See, Althusser claims that it is now the school. अब ये स्कूल है which at every phrase अपने यंग ऑडियंस को अपने पास कैप्चर करके रखती है, लाइक इट मे बी फॉर 5 to 6 days, और ताकि उनको अलग अलग डिसिप्लिन सिखा सके, अलग अलग कोड भी सिखा सके. It is important that ideology is somewhat coded because it is self-effacing. See, it is important that ideology क्या है, is somewhat coded because it is self-effacing. What is important in ideology as a representation of the imaginary relationship of individual to their real condition of existence is the relation to those conditions that is represented therein. See, what is important ideology as a representation of the imaginary relation of individual to their real condition of existence is the relation to those conditions that is represented therein. The ideological state apparatus finally constitute the reproduction of the relation of production and of the relation driven from there. Specifically, socio-economic structure requires particular ideologies. See, अब ये जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसको भी एक आइडियोलॉजी लगती है. दिस आइडियोलॉजीज आर इंस्टेंटेड बाय इंस्टीट्यूशंस और आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus like family, school, church, etc. that provide the developing subject with categories in which she can recognize herself. See, अब दिस आइडियोलॉजीज क्या है, दिस आइडियोलॉजीज आर इंस्टेंटेड बाय इंस्टीट्यूशन. अभी आइडियोलॉजीज कहाँ से आती है, ये आइडियोलॉजीज अपने को इंस्टीट्यूशन से मिलती है या कोई आइडियोलॉजिकल स्टेट से मिलती है. अभी आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus यहाँ पे क्या है, आप जो भी अच्छी बातें सीखते हो वो कहाँ से सीखते हो, वो आपके स्कूल, फैमिली, चर्च, इन सब से ही सीखते हो ना, क्योंकि दे आर द बेस्ट सोर्स टू गिव यू द प्रॉपर नॉलेज, दे आर द बेस्ट पर्सन टू गिव यू प्रॉपर ट्रेनिंग दैट प्रोवाइड द डेवलपिंग सब्जेक्ट विथ कैटेगरीज इन विच शी कैन रिकॉग्नाइज हर सेल्फ, ताकि वो हर सब्जेक्ट का, हर कैटेगरी का प्रॉपर नॉलेज मिले, सब कुछ अच्छे से मिले, ताकि आप खुद को अच्छा इंसान बना सको, खुद को आप अच्छे से काम कर सको. इन as much as a person does so and embrace the practice associated with those institutions has been successfully held or interpreted and recognized herself as that subject who does those kind of things. See, in as much as person does so, see, जितना ही पर्सन करता है एंड एम्ब्रेसेस द प्रैक्टिसेस, और फिर वो उस तरह से प्रैक्टिस करता है, और जब प्रैक्टिस जब ये करते हैं तो क्या है, वो सारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे क्या है, वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, वो हर कोई खुद को अच्छे से रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, सब्जेक्ट अच्छे से पहचानने लगते हैं अपने, और वो सारे उस हिसाब से चीज़ें करते हैं. राइट, जैसे हर घर में दिवाली की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है, सबका पूजा करने का अपना अलग अलग तरीका है घर में, तो क्या है, तो जैसे आप देखते हो अब वैसे ही वही ट्रेडिशन कंटिन्यू होता है ना. जैसे मेरे इन लॉज के घर पे दिवाली की पूजा जैन विधि से अलग से की जाती है, बट मेरी मम्मी के यहाँ पे दिवाली की पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. लाइक फराल से सब गठे होता, प्रॉपर सारा मंडप वगैरह सब अच्छे से जमाते हैं, वो महाराज आते हैं, वो महाराज हर एक चीज़ की अच्छे से पूजा वूजा करते हैं, एंड द थिंग्स गोज ऑन वेरी नाइसली. यहाँ पे महाराज कोई नहीं बुलाते, ये लोग घर में ही अपनी वो जैन विधि के हिसाब से पूजा कर लेते हैं हम लोग. तो क्या है, अभी हमारे बच्चे ने वही सीखेंगे. तो सेम थिंग, एज द इफेक्ट ऑफ दिस रिकॉग्नाइजेशन इज टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन. तो क्या है इसका इफेक्ट, ताकि सोशल रिलेशन क्या है, कंटिन्यू रहे. Althusser argued that a dictatorship of the proletariat is necessary so that ideologically state apparatus productive of the bourgeois subject can be replaced with those productive of proletarian or communist subject. See, Althusser argued that a dictatorship of the proletariat is necessary. A dictatorship of the proletariat मतलब वर्किंग क्लास के डिक्टेटरशिप ज़रूरी है, ताकि आपका आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, ताकि आप बोर्गी क्लास को क्या है थोड़ा सा रिप्लेस कर सको, और थोड़ा सा आप खुद को भी कंट्रोल कर सको, ताकि आप प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, और कम्युनिटी सब्जेक्ट्स भी कंट्रोल हो जाएंगे यहाँ पे. We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll finish our first topic. You can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID.
My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.